सोच में सकारात्मकता लाएं, जीवन को बेहतर बनाएं। मनोदर्पण पर कॉल लगाएं, मनोबल अपना और बढ़ाएं। मनोदर्पण पर कॉल लगाएं, मनोबल अपना और बढ़ाएं। चलो आज ही प्रण ले हम, मानसिक स्वास्थ्य सुधारे हम। चलो आज ही प्रण ले हम, मानसिक स्वास्थ्य सुधारे हम। मनोदर्पण के काउंसलर से परामर्श पाने के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 844-844-0632। नंबर एक बार फिर सुने 844-844-0632। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष सत्र में जिसका नाम है मनोदर्पण परिचर्चा। मैं हूं रेणु भट्ट, आप सभी के साथ आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस लाइव इंटरैक्टिव फोन इन सेशन में। अपने सभी देखने वालों को हम मनोदर्पण परिचर्चा के बारे में एक ब्रीफ दे दें और हम अपने सभी देखने वालों को बताएंगे कि सहयोग एंड परिचर्चा सेशंस आर हेल्ड अंडर मनोदर्पण इनिशिएटिव। इट्स अ ब्रिलियंट इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन as a part of Atmanirbhar Bharat for providing psychosocial support to all our students, teachers and teacher educator out there. और अपने सभी देखने वालों के साथ हम शेयर करना चाहेंगे हमारा आज का टॉपिक जो है gratitude and resilience strengthening mental well-being, and we have joined by our esteemed panelists. So without any further delay, let's quickly meet them. सबसे पहले हम मिलना चाहेंगे डॉक्टर सौरभ कुमार से। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं RIE NCERT भोपाल से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम, सभी को नमस्कार जी। हमारे अगले पैनलिस्ट हैं डॉक्टर त्रिपाठी Sakuja. You are counseling psychologist from New Delhi. Very warm welcome, ma'am. Grateful, namaskar. We have joined by Mr. M. Gopal Reddy as well. You are PGT teacher counselor from केंद्रीय विद्यालय पुणे. आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर आरती त्रिपाठी पांडे। आप PGT हैं केंद्रीय विद्यालय पंचमढ़ी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। और हमारे साथ हैं मिस सौम्या साहू एक्टर। यू आर प्रैक्टिसिंग काउंसलर फॉर भोपाल। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर लाविना। थैंक यू। और आप काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं इंदौर से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते मैम। और अपने सभी देखने वालों को हम कहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं eVidya चैनल नंबर 6 और 11 पर, और इन चैनलों के अलावा आप हमारे साथ हमारे YouTube चैनल ncertofficial पर भी जुड़े हुए हैं। और जैसे कि हम ये प्रोग्राम, ये सत्र आपके लिए लेकर आते हैं, तो वी आर एक्सपेक्टिंग योर पार्टिसिपेशन एज वेल। बट बिफोर दैट लेट मी शेयर वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विद you regarding India's G20 presidency. We are indeed very proud that India assumed the G20 presidency and will convene the G20 Leaders Summit for the first time in the country in 2023. A nation that deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of all. And in doing so, manifests the true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, or we can say the whole world is one family. With that very important piece of information, let's quickly get back to the session, जिसमें हम आपको जानकारी दे रहे हैं किस तरह से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि अगर आप मनोदर्पण के बारे में ज़्यादा चीज़ें जानना चाहते हैं तो आपको एक्सप्लोर करना होगा हमारी वेबसाइट जो है www.manodarpan.education.gov.in। ये हमारी डेडिकेटेड वेबसाइट है, आप इसे विजिट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ फेसबुक के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो NCERT पर जाकर हमारे फेसबुक पेज पर जुड़ सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू। और आपको हम बता दें हमारे मनोदर्पण का एक नेशनल टेली हेल्पलाइन नंबर भी है जिस पर आप परामर्श पा सकते हैं। तो नंबर है 8448440632। और आप फोन के माध्यम से अपनी सभी क्वेरीज और अपनी बातें हम तक शेयर कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को पहुंचा सकते हैं। हमारा नंबर है 8800040559। और इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं जो है NCERT ऑफिशियल, और वहां पर आप लाइव चैट बॉक्स में जाके अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। इनके अलावा आप ईमेल के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं, और हमारा ईमेल एड्रेस है dth.plastic@cit.nrc.in। क्लास 6 के अलावा आप क्लास 11 भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो वो तमाम माध्यम रहे जिनके माध्यम से जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं अपनी सभी क्वेरीज के साथ। We want you to participate in this live interactive phone-in session with all your queries and doubts. If you want to share your experience, please feel free to connect to us through our various media. हमें बेसब्री से आपके प्रश्नों का इंतजार रहेगा, और जब तक आपके प्रश्न हम तक आते हैं हम अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं
और सौरभ सर, हम आपके पास आना चाहेंगे एंड वी वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस दिस टॉपिक टू ऑल आवर व्यूअर्स एंड लर्नर्स। आप प्लीज हमारे सभी व्यूअर्स के साथ इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करें, एक्सप्लेन करें। थैंक यू वेरी मच मैम। और सबसे पहले सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। As madam has already told that today the topic on which we are going to discuss is gratitude and resilience, strengthening mental well-being. So in this topic, basically we will discuss about two important psychological concepts that are gratitude and resilience, their interconnectedness, and what is the role of these concepts in the promotion or strengthening mental well-being and overall well-being of the student. So first we will discuss about gratitude. What is gratitude? It is very important to understand for each and every student who are watching this program. और अगर हमें gratitude को समझना है तो एक quote मुझे ध्यान आता है कि if purpose of our life is happiness, then gratitude is the royal highway for it. कि अगर हमारे जीवन का उद्देश्य आनंद की प्राप्ति है तो इस आनंद को प्राप्त करने का अगर कोई राजमार्ग है तो वो gratitude है। हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को लेकर अक्सर चिंतित रहते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, लेकिन अगर हम फोकस करें कि क्या हमारे पास है और एक छोटी सी एक्टिविटी अगर हम करें, हम अपनी दोनों आंखों को बंद करें और आंखें बंद करने के बाद अगर हम देखें कि हमें क्या क्या मिला है और हम देखते हैं कि हमारे पास एक अच्छी हमारी फिजिकल स्ट्रक्चर है, हमारे पास हमारी सभी ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारे पास सोचने समझने की शक्ति है, हमारे पास हम अपने आसपास देखते हैं, हमारे पास हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे पीयर्स हैं, इसके अलावा हमारे पास खाने के लिए फूड है और बहुत सारी अगर करते हैं तो एक लंबी लिस्ट हमारे पास बनकर तैयार होती है। और उस लिस्ट को अगर हम देखें, फिर हम सोचें कि हम पहले फोकस कर रहे थे कि हमारे पास क्या नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। और अगर सारी ये फिजिकल और या फिर ये जो लिविंग थिंग्स हैं, अगर इसके लिए हम किसी को श्रेय देना चाहें तो हम ऐसी भी एक सूची तैयार कर सकते हैं। और जब हम उनके प्रति अंदर से जब हम आभार ज्ञापित करते हैं, हम एक्नॉलेज करते हैं उन सभी को, तो यही हमारा ग्रेटिट्यूड है। ग्रेटिट्यूड बेसिकली है क्या कि हम अपने आसपास के उन सभी लोगों को, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, उन सभी को हम धन्यवाद ज्ञापित करें कि आपसे हमें बहुत कुछ मिला है। और इस तरह की जब हमारे अंदर ये फीलिंग डेवलप होती है, हमारे अंदर पॉजिटिव इमोशंस डेवलप होते हैं और धीरे धीरे ये हमारी जो मेंटल हेल्थ है, मेंटल वेलबींग है, उसको स्ट्रेंथन करते हैं। So gratitude refers to the practice of recognizing and appreciating the positive aspect of life, both big and small. It involves cultivating a mindset of thankfulness and acknowledging the goodness that exists, even challenging situations. So gratitude is often expressed toward others or experienced internally as a positive emotion. तो ग्रेटिट्यूड हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम देखते हैं कि ये आज नहीं, हम कई बार अक्सर चर्चा करते हैं कि पहले की जो हमारी पीढ़ी थी वो बहुत खुश थी, लेकिन अगर हम उनकी डे टू डे लाइफ को अगर हम ऑब्जर्व करें और उसकी एनालिसिस करें तो हम देखते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, हम वो अपने मॉर्निंग से लेके अपने इवनिंग तक बहुत सारे जो काम करते थे, इवन जो लिविंग थिंग्स उन सभी के प्रति आभार ज्ञापित करते थे और जिसके कारण उनका जीवन बहुत सरल था और उनके अंदर पॉजिटिविटी थी। तो एक हमारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, दैट इज ग्रेटिट्यूड। दूसरा हमारा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है रेजिलियंस। और रेजिलियंस को समझने के लिए मुझे एक बचपन की छोटी सी कहानी याद आती है और मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने वो कहानी सुनी होगी। एक फादर थे, अपने बेटे को लेके एक तेज नदी जिसमें बाढ़ आई हुई थी उसको दिखाते हैं और दिखाते हुए बोलते हैं कि बेटा इस नदी के अंदर देखो, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े विशालकाय पत्थर हैं, बड़े बड़े विशालकाय वृक्ष हैं, लेकिन इसके अंदर आपको कोई घास का तिनका दिखाई देता है। क्यों घास इसमें बहती हुई आपको क्यों दिखाई नहीं देती, जबकि बड़े बड़े जितने बड़े बड़े आपको वृक्ष और पत्थर इस नदी की बाढ़ के साथ में बहते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उसके अंदर लचीलापन है। So resilience is the ability to adapt and recover in the face of adversity, challenges or stresses. तो कैसे हम बाउंस बैक करते हैं, दिस इज द कैपेसिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम द डिफिकल्ट और द चैलेंजिंग सिचुएशंस।
कि हम कैसे डिफिकल्ट और जो चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं उनसे कैसे बाउंस बैक करने की जो कैपेसिटी है, हमारी जो एबिलिटी है, वो हमारी रिजिलियंस कहलाती है। और रिजिलियंस का मतलब केवल बाउंस बैक करना नहीं है या केवल चुनौतियों को से बचना नहीं है, बल्कि चुनौतियों का सामना करते हुए कैसे हम उनसे बाहर निकल कर आते हैं, ये हमारा रिजिलियंस है। अब जो तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, वो है इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन ग्रेटिट्यूड एंड रेजिलियंस। ये दोनों अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो ये आपस में इंटर रिलेटेड है। और जब एक इंडिविजुअल इन दोनों को जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता है तो हम देखते हैं कि दोनों का जो एक इफेक्ट है वो पूरी तरह से इंडिविजुअल की जो मेंटल हेल्थ है और वेलबींग को बहुत ज्यादा, उसको जिसे हम कहें कि उसे पॉजिटिव साइड में ले जाने का काम करता है। तो इसके कौन कौन से इफेक्ट हैं, अगर मैं संक्षिप्त में अगर उनके बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पॉजिटिव आउटलुक। कि ग्रेटिट्यूड हमारे अंदर क्या है, एक तरह का पॉजिटिव आउटलुक डेवलप करता है, हमारे अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करता है, क्योंकि हमारा जो फोकस होता है, हमारा पर्सपेक्टिव होता है, वो चेंज होता है और हम क्या नहीं है उसकी बजाय फोकस करते हैं कि हमारे पास क्या है। हमारे पास क्या नहीं है उसकी चिंता की बजाय हम चिंता करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं। और इस तरह से हमारा एक तरह का जो हमारा एक रिजिलियंस है उसके लिए पॉजिटिव पर्सपेक्टिव तैयार होता है और हमारे अंदर ये समझ विकसित होती है कि चैलेंजेस हैं, दे आर नॉट परमानेंट, वो परमानेंट नहीं है, उनको जीता जा सकता है, उनको ओवरकम किया जा सकता है। तो इस तरह हमारे अंदर पॉजिटिव आउटलुक डेवलप करने का काम ये दोनों हमारे फैक्टर करते हैं। Another important aspect is emotional regulation, क्योंकि gratitude promotes positive emotions and which contribute to emotional resilience। और जिसके कारण क्या है कि धीरे धीरे हमारी जो नेगेटिव या डिफिकल्ट सिचुएशन से हमें कैसे बाहर आना है, कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। इवन कोई भी बहुत ज्यादा, जैसे हम कहें सिचुएशंस है जहां पर हम बहुत ज्यादा अपने आप को हम कहीं वीक फील कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशंस में भी अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, ये दोनों फैक्टर इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कोपिंग स्ट्रेटजी। ग्रेटिट्यूड है एक एडिशनल कोपिंग स्ट्रेटजी प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये हमें एक नया पर्सपेक्टिव, नया एक हमें एक जैसे हम कहें कि हमारे अंदर एक नया एक इस तरह का एक हमारे अंदर पर्सपेक्टिव डेवलप करता है कि कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन में हम देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, हमारी कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ हैं जिन पर हमें फोकस करना है, और उन स्ट्रेंथ पर फोकस करने के साथ साथ हम उन जो चैलेंजिंग सिचुएशन है या जो डाइवर्स सिचुएशन है उनसे बाहर आ सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे रिलेशनशिप को दूसरे लोगों के साथ, हमारे जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उनको स्ट्रेंथन करने में हेल्प करते हैं, हमारे कम्युनिकेशन को बेहतर बनाते हैं। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे बच्चे तो इस कार्यक्रम को देख ही रहे हैं, साथ साथ पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए, टीचर्स का क्या रोल होना चाहिए, अगर जरूरत है तो उनको जो हमारे स्कूल काउंसलर हैं वो किस तरह बच्चों में एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, रेजिलियंस ये डेवलप करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो इन सारे एस्पेक्ट पर आज हम इस परिचर्चा कार्यक्रम में चर्चा करेंगे और इस हमारे साथ एक बड़ा पैनलिस्ट है, हम सभी पैनलिस्ट के पास चलेंगे। थैंक यू। अच्छे से पूरा टॉपिक, ये जो शीर्षक है, हमारे सभी दर्शकों को एक्सप्लेन किया। और आपने जैसे बताया कि ग्रैटिट्यूड रखना बहुत जरूरी है, थैंकफुलनेस होना चाहिए। और क्योंकि हमारे बच्चे जो है वो ग्रोइंग एज में है, डेवलपमेंट जिनका हो रहा है, तो ऐसे में उनके अंदर सारी पॉजिटिव चीजें होनी चाहिए जो कि उनकी ग्रोथ में उनको हेल्प करेंगी। यहाँ पर हम अपने अगले पैनलिस्ट के पास जाएंगे, मिस सौम्या साहू मैम, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना टॉक शुरू करें। हेलो ma'am, are we audible to you? Today I would like to talk. Yes ma'am, please continue. Right. So today I would like to talk about gratitude, a small step towards happiness and mental well-being. So as Saurabh sir very nicely explained what gratitude is, हम इसको इस तरीके से देखेंगे, gratitude helps you see what is there instead of what isn't. हमारे पास एक टेंडेंसी होती है टू सी दैट द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। अगर हमारे पास 10 रुपए है तो किसी के पास 11 रुपए है तो हमें लगता है कि वो ज्यादा अच्छा कर रहा है, बट दैट डजंट नेगेट द फैक्ट कि वी स्टिल हैव व्हाट वी ऑलरेडी ओन। सो दैट 10 rupees, that the good healthy body, the happiness, the good relations that we own are just ours, right? And that is essentially what gratitude helps us with.
It helps us to take a moment and recognize what is important in our lives, what are we getting, what is helpful for us, and be thankful about it. So, definition of gratitude is that it can look a little different from one person to another. Gratitude is generally defined as a disposition or characteristic that allows an individual to perceive and appreciate positive and meaningful aspects of our life. Like सौरभ सर ऑलरेडी मेंशन, हमारे पास जितनी भी अच्छी चीजें हैं उसको, हमारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को रिकग्नाइज करना एंड थैंक करना, दैट इज gratitude. And gratitude can also be described as an emotion of thankfulness and recognition. So every time we recognize what is going good in our lives, जो भी अच्छी चीजें चल रही है, and we thank ourselves and others for it, we are essentially practicing gratitude. Now, when we come to benefit of gratitude, while there are several studies that link gratitude to enhanced physical, social, and mental health, it reduces stress. It helps us develop a stronger immune system. It helps us improve the sleep quality, lower blood pressure, and those are just a really few benefits of practicing gratitude. And it can also, enhance our mental well-being in some more meaningful ways. So, for example, there are three aspects. We have physical, emotional, and social. So, when it comes to physical aspects of gratitude or benefits of gratitude, it helps us develop a stronger immune system. We are less bothered by what is going wrong in our body. We feel more motivated to, work towards life. And those are the ways that, gratitude helps us in the physical essence. When it comes to emotional, it makes us experience higher levels of positive emotions, because हमारा जो disposition रहा है ना brain का, it has always been towards a negative side, because that is what kept us alive, right? हम जब threats को देखते थे, उनको recognize करते थे, तब हमें लगता था कि it's important to look at the negative things. It's important to look at things that make us feel scared. But in that whole journey, जहाँ पे हमारे threats are not exactly outside, we have actually forgotten to, give give recognition to things that are going on. हमें लगता है कि कोई अच्छी चीज होती है तो ये तो होनी ही थी, पर अगर कुछ बुरा होता है तो ये तो बुरा तो मेरे साथ हमेशा होता है, हमेशा मेरे साथ खराब होता है, एंड मेरे साथ चीजें कभी सही नहीं होती, एंड दैट इज समथिंग दैट क्रिएट्स अ स्नोबॉल इफेक्ट. तो हम सिर्फ नेगेटिव चीजों पे फोकस करते रहते हैं. So gratitude is like rewiring your brain to see the positive side. It's a small practice, but like its long-term benefits is a lot. And it's something that makes you, focus. It makes your perspective a little more in the gray area rather than black or white. Now, when it comes to, talking about what are the benefit, it helps you regulate your emotions. That means कि जब आप negative emotions को भी experience कर रहे हो, side by side, you always recognize and you take note of the positive things as well. It helps you elevate your mindset. So whenever you focus on positive things, आपका positivity का emotion भी उसके साथ साथ connected होके, it will make you feel so much more better. It helps you feel more connected to others, right? So whenever we're grateful for people as well, so parents, friends, teachers, mentors, whosoever is in our life, it also helps us cherish the relationships that we have. Also helps us, recognize and thank people. Like, मेरी teacher ने maths was a big subject for me. My teacher helped me overcome maths, and I'm forever grateful to her for that, right? And it also protects you from the effects of stress. Like I mentioned, stress is something that happens to us when we, get engaged in completely negative coping strategies or negative thinking patterns. So this is one thing that, serves as a barricade for us, or serves as a, balancing strategy for us when we're in a stressful situation. Now, when we talk about what's the proof, या फिर कैसी कैसी researches करी गई हैं, या फिर कौन सी studies हैं that help us understand the scientific impact of gratitude on us, हम एक study को देखेंगे where two psychologists, Dr. Robert A. Emmons of University of California and Dr. Michael of University of Miami, उन्होंने एक research की थी gratitude पे. In this study,
they asked all the participants to write a few sentences each week focusing on particular topics. एक group ने they mentioned all the things that were grateful or they were grateful for जो पूरे week में हुई है, ठीक है? एक जो second group था they wrote whatever irritated them throughout the week. And there was this third group जिसने लिखा था कि whatever affected them throughout the week. So this was a neutral group, no emphasis on positive or negative. So after 10 weeks, those who wrote about the gratitude were more optimistic and felt better about their lives, right? And surprisingly, they also exercised more, they were more motivated and had fewer visits to physicians and than those who focused on sources of aggravation. मतलब जिन्होंने फोकस किया ऑन द मोर ग्रेटफुल थिंग्स, उनको डॉक्टर के पास कम जाने की जरूरत पड़ी, उनको उनका मोर पॉजिटिव आउटलुक हुआ एंड दे वर मोर मोटिवेटेड ओवरऑल देन पीपल जिन्होंने फोकस किया कि उनको क्या तकलीफ हो रही है दिन पूरे वीक में और थ्रू आउट द एंटायर टाइम. Now there was one more study and this was done by a very famous psychologist that is Dr. Martin E.P. Seligman. And he's from University of Pennsylvania, and he tested the impact of various positive psychology interventions on 411 people, each compared with control assignment of writing about early memories. And there was this one particular time when the participants wrote about they had to write a letter and they had to deliver it to a person that they weren't able to thank properly. So it was a letter of gratitude towards them. It was a letter of thankfulness that they gave to a person, right? And these were the people, these were the participants that immediately exhibited a huge increase in happiness scores. And this impact was greater than any form of intervention with benefits that lasting for a month. So as I mentioned earlier, gratitude rewires your brain to look for the positive aspects of life. Now, there are multiple ways in which you can practice gratitude, and there are multiple ways in which you can enhance your well-being using gratitude. This is something that has been spoken since our ancient times. हमारे जो पूर्वज होते थे वो भी बोलते थे कि बेटा जो है जिंदगी में उसको हमेशा उसके लिए ग्रेटफुल रहो, उसको हमेशा प्रणाम करो, जो भी चीजें हैं उसको थैंक दो, चाहे फिर वो नॉन लिविंग थिंग हो जो भी आपके पास है, चाहे वो लिविंग थिंग हो, चाहे वो नॉन एलिमेंटल हो. Everything that provides you a life, everything that provides you a happy, a space to flourish is worth being thankful for. So this is essentially what gratitude is. Now there are certain ways in which you can, practice gratitude. So for example, there is something known as a gratitude journal. जिसमें we write everything that we're grateful for at the end of the day, right? So it could be 2 things, it could be 5 things, it could be 10 things. So we write it. So essentially we, tell ourselves or we give thanks to us for, running into positive things, and we give thanks to our environment for giving us positive things as well, right? And there is mindfulness. It's, breathing from your heart. So taking in deep breaths, feeling those breaths in our body and being thankful to our body for, being healthy, providing us opportunities to go outside, play, work, whatever it is that is being provided to us. Now, I would, now the benefits, the strategies and how to apply or how to, deep dive into gratitude. I think Dr. Tripti ma'am would be able to enlighten us with it. थैंक यू सो वेरी मच सौम्या मैम, और इतनी अच्छी बात आपने शेयर की हमारे सभी बच्चों के साथ. आई एम क्वाइट श्योर आपकी सभी बातें, आपकी सभी इन्फॉर्मेशन हमारे सभी व्यूअर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रही होंगी. यहाँ पर हम अपने सभी व्यूअर्स से ये कहना चाहेंगे, वी आर रिसीविंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल. अब हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपनी कोई क्वेरी या फिर कोई अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे. तो आपको यूट्यूब चैनल पे जाना है जो है NCERT ऑफिशियल. वहां पर आपको अपनी क्वेरी, अपनी कोई भी बात जो आप शेयर करना चाहते हैं, अपना कोई भी एक्सपीरियंस जो आप हमारे एक्सपर्ट से हमसे शेयर करना चाहते हैं, वहां पे आप ड्रॉप कर सकते हैं. आप फोन के माध्यम से भी हमें बता सकते हैं, जो है 8800 440 559.
तो ये हमारा तरीका, ये हमारे माध्यम है जिनसे आप हमसे जुड़ सकते हैं अपनी सभी बात हमारे एक्सपर्ट्स के साथ शेयर करने के लिए। और आप जरूर अपनी ज्यादा से ज्यादा बातों के साथ हमसे जुड़ें। यहाँ पर हम अपने अगले पैनलिस्ट के पास जाएंगे और उनसे हम जानना चाहेंगे ग्रैटिट्यूड एंड रेजिलियंस जो हमारा टॉपिक है इसके बारे में वो और क्या क्या बातें हमारे सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं। हम जाएंगे डॉक्टर तृप्ति मैम के पास। तृप्ति मैम, ओवर टू यू। Thank you so much. And we are starting with the word thank you. And I really thank all the viewers who have spared their time and are here. And I'm sure after 4:30, you all will be having a different experience in your body, different feeling in your mind, and your soul will be enriched and empowered to have a grateful and a good life. So I remember when I was small, I was in a school in class 3. So I remember that prayer we used to have, and I would want all the children here, students here, to remember that. Ma'am, this is not my book. I don't want sympathy. Yeah. So I would want children to remember these 4 lines prayer, but I would say the best prayer, the best, simplest, smallest prayer is only 2 words, and that is thank you. So I remember this prayer, and I can't start any program on gratitude without this prayer. So that is thank you, God, for the food we eat. Thank you, God, for the world so sweet. Thank you, God, for birds that sing. And thank you, God, for everything. So these 4 lines are so powerful. And if you understand gratitude in depth, when we are talking about thank you, God, I would mean, why not say thank you, God, for today? And today is the day. And then we come to thank you, God, for this hour. Thank you, God, for this second. We have 86,400 seconds in a day. And every moment, every second needs to be thanked. And as Dr. Saurabh said, it needs to be recognized. It needs to be appreciated. Dr. Saurabh also said that we have a purpose in life. Yes, everybody has a journey from birth to death, but in between there is a purpose in life, and we all need to be grateful for that purpose in life. If we are able to understand that purpose in life, our purpose will be achieved. And when I'm talking about a day, thankful for being in this day today, I remember a story. There was a blind boy who was sitting on a step with a hat. वो हैट के साथ अपने एक सीढ़ी पे बैठा हुआ था और उसने वहां एक साइन बोर्ड लगाया हुआ था कि आई एम ब्लाइंड, प्लीज गिव मी समथिंग। एंड शाम तक उसके हैट में थोड़े से सिक्के आते थे, फ्यू पॉइंट्स यूज्ड टू कम। In one day in the morning, somebody came there and he changed the signboard. He just changed the signboard and the hat was filled with money. So when he came back in the evening, the blind boy asked, what did you write on the signboard? And what he wrote was that today is a beautiful day, but I cannot see it. So meaning was same but it had so much of emotions within. That is what, there's a difference in the word thank you and the word gratitude. They are not same. We feel that thank you and gratitude is same. But no, thank you can be just a ritual. It can be just a word without any intention of that, without any meaning in that. But if I say about gratitude, it has a lot of meaning, it has a lot of intention, it has a lot of emotions in it. It is connected, the word gratitude is connected to our mind, body, and soul.
and we need to go much deeper in it. And when I'm saying deeper, I would like to share that supposing we have in our life, it is full of joy and sorrow. We have good moments, we have not so good moments. We have flowers in our life, we have thorns in our life. But what does a florist do? Florist picks up the flowers, throws the thorn, and then ties with a thread and makes a bouquet. In the same way, dear viewers, we have pluses in our life, we have minuses in our life, and what we need to do as a florist, we need to throw away the minuses, take the pluses, and tie it with the thread, and that thread is the gratitude. So if you tie your pluses with gratitude thread, as Soumya ma'am said, it's something you have rather than you don't have. So if you are focusing on what you have and tying it with the thread of gratitude, then you will be able to achieve your purpose of life. If we go much deeper, if we go deeper and deeper, we will see the physiology of gratitude, psychology of gratitude, and spirituality of gratitude. So let me go to first to the physiology of gratitude. In our body, the God has given us such a beautiful body, and no science can beat it, no scientific invention can beat it. The way our body functions, the way the structure of our body is. So if I take as physiology of gratitude, we have some hormone secretion in our body. And we have two types of hormones. One is pleasure hormone, happiness hormone, and feel good hormone. And second category is stress hormone. As whenever we have some ailment in our body, we take a dose of medicine. So today I would like to share a dose of gratitude with you all. Dose of gratitude, it's a mnemonic for DOSE, dose. Now if we take D is the hormone dopamine. So when we are happy about something and when we are grateful to what we have, then dopamine secretes. And dopamine gives us pleasure, gives us happiness. Then we come to O. D is dopamine. O is oxytocin. So when we are talking about oxytocin, it is the love hormone. So when we are grateful to other people in our life, when we are in gratitude to those whom we love or those we don't love but we know, but we are in gratitude to other people, then that oxytocin hormone secretes. Then we come to S, serotonin, and it is so important. You may have all the riches in life, but unless you focus on unless the serotonin secretes in you, you will not be satisfied, you will not be compassionate. And this serotonin comes when you are kind to others, when you are giving to others, when you are receiving from others with gratitude. So doing a small thing for someone and receiving something from someone with gratitude will secrete the serotonin in you. And now we come to E, that is endorphin. When you are doing something for someone, when you are acting, when you are taking an action, or maybe you are exercising and being grateful to your body that you are able to exercise, you are able to dance. So when you are able to say thank you to your body, to your ability,
then endorphins release. So in a simple word, D dopamine, O oxytocin, S serotonin, and E endorphin, this dose of hormones is your physiology of gratitude. So follow these small, small steps, small, small movements of your body and be grateful and enjoy this dose. Second aspect of physiology, I would say, is prefrontal cortex we have. So in our mind, in our brain, we have two major organs. One is amygdala, which is only emotion, which is dealing with only emotion. But when we are able to add on some thoughtfulness in that emotion, then our neofrontal cortex activates. And whenever we are in gratitude, our emotion is combined with our thinking and our neofrontal cortex is activated. And that is what human beings are supposed to do. Third aspect of physiology would be the neurotransmitters. We call this concept as neuroplasticity. Whatever we are doing, we are creating neural connection in our mind. So whatever we are thinking, we are feeling, we are doing, a connection is made. And that is a neural connection in our mind. When we are in adversity, when we are focusing on our lack, when we are focusing on what we don't have, we are creating a neural connection. And what do we need to do? Very simple. We need to change that neural connection. And how can we change that neural connection? That is through gratitude, through being in a grateful state. I would like to give you one action, all of you. When I'm talking about physiology, psychology, and spirituality, I want all of you to practice this action every day so that your neural connections are created. You have to create a new neural connection. And that is when I'm talking about physiology, psychology, and spirituality today, I mean, in a way, talking to our mind, our heart, and our soul. So let's do one action for that. All the viewers, I would want you to follow me. We will do a small action which I want you all to commit that you will be doing it every day. So kiss your mind, comfort your heart, and count your blessings. So mind, body, and soul. Kiss your mind, comfort your heart, and count your blessings. If you are doing these three things, you are making a new neural connection, and that will be the connection between your mind, your body, and your soul. As we have talked about physiology, now I want all of you to understand a bit. It is only a bit because it is a very vast ocean, but a bit of psychology of gratitude. When I'm talking about psychology, I would like this gratitude has become a psychological construct. And I would just like you to tell in a one line what actually psychology is. So psychology is nothing except a connection between what I think, what I feel, and what I do. In national education policy, also, a great focus has been on head, heart, and hand. And if we are able to make that connection, the psychology of gratitude flourishes. So in a way, what we are doing is not because of these situations. If you are giving exams, you have your exams in the school, children, and you are studying. So is it because of the exams you are studying? Then you will not be able to perform well.
You have to study because you feel like studying. So every action has a feeling behind it. You feel like studying, you are finding some benefit out of studying, then only you will be able to study. But there is something behind the feeling also. Behind feeling, thinking. What am I thinking about study? Ask yourself, is this going to help me? Is this going to benefit me? Am I going to learn out of it? Is it going to be helpful in my life? And do I need to be grateful for it? Grateful to my parents, grateful to my teachers, grateful to the education department, NCRT, grateful to the system, and grateful to me. And of course, grateful to universe. So if that thought comes to me, then only I will be able to do any action. It is not the situation that makes us act. It is what I think about the situation that makes us act. And if this thinking is enveloped with gratitude, then outcomes will be awesome. So study with gratitude, play with gratitude, whatever you are doing, do with gratitude. And one more concept in psychology I would like to continue is that we have gratitude at 3 levels: gratitude for past, gratitude for present, and gratitude for future. I'm having gratitude for my past, that I was able to study and reach this level. I'm grateful to COVID. Because of that, because of COVID, I was able to get the help of technology, and we are here. I was able to get time, and I wrote a book on gratitude, which was my best achievement, one of the best achievements. And then we are able, then second level is gratitude to present. I'm grateful to be here amidst you all. And then gratitude to future. I'm feeling grateful that even if one line of today's session reaches you, the future of you, of others, of me, of life will be wonderful. So that is the beauty of psychology. And how will all this come? If I tell you the steps for it, first step, notice. What do you notice? Notice whatever is happening good in your life. And for that, you will have to look for cues. For example, I'm noticing the cue that my network is working and I'm reaching to you, and I'm grateful for that. If I'm traveling somewhere and I see an ambulance horn, an ambulance going alongside, I feel gratitude. If I see a police van, I feel gratitude. So these are the cues which we have to look upon and feel grateful every moment. So first thing we notice, and second, as I said, think. Then we think. Second step would be think. What is the benefit of this? What I'm going to learn from this? And am I going to be benefited out of this? And next step would be feel. Unless you feel, your thinking will be just like a robotic thinking. We are going to have robotic teachers, robotic doctors, but that feeling of gratitude we have to have in ourselves. That will only make us work and move forward. And third, next is act. Without action, nothing is going to happen. If you think studies are good for you, if you feel, yes, I need to study, I have to study, but unless you sit down, unless you open your book, nothing is going to happen. So be grateful that you all are
having this opportunity to study the exams and to have careers in your life. But the psychology of gratitude will help you move towards whatever career you want. And if we come to the next part, which is the spirituality of gratitude. You know what? हम नदी की पूजा करते हैं, हम पेड़ की पूजा करते हैं, हम गाय को माता मानते हैं, समुंदर हमें कुछ देता है तो हम उससे डरते हैं, सूरज, चांद, हम सब की पूजा करते हैं। मैम है, आई वुड क्यों करते रिक्वेस्ट हैं? यू टू सम अप प्लीज। या हम क्यों करते हैं वो पूजा? क्योंकि वो हमें देते हैं, और वो देते हैं तो हम पूजा करके उनको थैंक्स करते हैं। तो we need to thank God, we need to thank the universe, and if we are able to take care of physiology, psychology and spirituality, most of all, trust in me, be grateful to me, be grateful to others, and be grateful to life, then life is bindas. Thank you. Thank you so very much, ma'am. There are a lot of things that we don't have in our life. बहुत सारी चीजें जो हमारे पास नहीं है, बहुत सारी चीजें जो हमें चाहिए अपनी जिंदगी में। पर जैसे हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे स्पीकर्स आपको बता रहे हैं बच्चों कि आपको अपनी लाइफ में अभी से ग्रैटिट्यूड का फीलिंग रखना चाहिए। ये ऐसा इमोशन है जो आपके अंदर होना चाहिए। जो भी चीज आपके पास है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, आप ग्रैटिट्यूड दिखाएं, आभार व्यक्त करें उसका कि वो आपके पास है, और फिर देखिए कि आपके अंदर कैसा सकारात्मक बदलाव आता है। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो अपने अंदर बदलने वाली होती है, उसके बाद ही बड़े बदलाव आते हैं। हम यहाँ पर अपने अगले स्पीकर के पास जाएंगे और उनसे हम और ज्यादा जानकारी लेना चाहेंगे ग्रैटिट्यूड एंड रेजिलियंस स्ट्रेंथनिंग मेंटल वेलबींग पर। और आरती मैम, हम अब आपके पास आएंगे और हम चाहेंगे कि आप अपनी डिस्कशन शुरू करें मैम। थैंक यू मैम। सबसे पहले व्यूअर्स को बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दी है। मैं यहाँ पर ग्रेटिट्यूड और रेजिलियंस, ये हमारे मेंटल हेल्थ को और हमारी वेलबींग को कैसे स्ट्रेंथन कर सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं एक संस्कृत के एक श्लोक से अपनी बात को शुरू करना चाहूंगी। चित्ते प्रसन्ने भुवनम प्रसन्नम, चित्ते विषर्णे भुवनम विषर्णम, अतोभिलाषे यदि ते सुखम स्यात् चित्त प्रसादे प्रथमम यतस्व। हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में हमेशा से ही हमारे मानसिक स्वास्थ्य को, मन की प्रसन्नता को एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यह जो हमारा चित्त है, यह क्या है? जिसे आज हम कहते हैं हमारा माइंड, हमारा हार्ट, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशन। तो जब यह प्रसन्न होगा तभी हम प्रसन्न होंगे और हमारा स्वास्थ्य, हमारे विचार, हमारी सकारात्मकता, इन सभी बातों पर हमारा प्रभाव पड़ेगा। यह एहसास इतना खूबसूरत होता है। यह जो ग्रेटिट्यूड है, यह क्या है? एक पॉजिटिव इमोशन, या ये हम कह सकते हैं हमारी वो भावनाएं जो हमें सकारात्मकता की ओर ले जाती हैं। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, पर यह एहसास करना कि हमारे पास जो है वो बहुत कुछ है, ये एक अनुभव ही हमें उस अज्ञात शक्ति के प्रति इतनी कृतज्ञता से भर देता है कि हमारा मन बहुत शांत हो जाता है। हमारे अंदर एक सकारात्मक दृष्टिकोण आ जाता है। एक शून्य से पूर्णता की स्थिति आ जाती है। शून्य अर्थात कुछ नहीं है और पूर्णता अर्थात बहुत कुछ है। हमें जीवन जीने के लिए, एक अच्छा जीवन बिताने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। हमारे विचारों में एक स्पष्टता आ जाती है और हम अपना बेहतर से बेहतर प्रयास कर पाते हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ हम दे पाते हैं। हमें जो चीजें प्रकृति के से बिना मूल्य के प्राप्त हुई हैं, अक्सर जो अनमोल है, अमूल्य है, उससे हम बिना मूल्य का भी मान लेते हैं और इसीलिए हम उसके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना भूल जाते हैं। कोरोना ने हमें बताया कि वो ऑक्सीजन
जो हमें हमेशा से प्राप्त होती रही है प्रकृति से, वो कितनी मूल्यवान है। हमें उसकी कीमत पता चली। वो शुद्ध हवा जो हमें हर ओर मिली हुई है, जिसके सहारे हम अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, वो जल, वो प्रकाश, वो अन्न, और सबसे बढ़कर हम सबका वो शरीर, वो स्वस्थ शरीर जिसके सहारे हम अपना जीवन बिता रहे हैं, यह कितना मूल्यवान है। परंतु वो उसके प्रति कृतज्ञ होना, ये हमें हेल्दियर बनाता है, हैप्पियर बनाता है। जैसा तृप्ति मैम ने बोला कि हमारे अंदर उस ग्रेटिट्यूड से वो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और वो हैप्पी हार्मोन्स क्या करते हैं, वो एक्सपेंड करते हैं हमारे ब्लड वेसल्स को, और रिड्यूस करते हैं ब्लड प्रेशर को, और हमारे जो हार्ट है इसे प्रोटेक्ट करते हैं। और जब हम अपने आप को हेल्दियर, हैप्पियर महसूस करते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलाव आ जाते हैं। कहा भी गया है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो ये हमारे सारे हार्मोन्स जो एक ग्रेटिट्यूड से, जो हमारी कृतज्ञता के भाव से उत्पन्न होते हैं, हम स्वस्थ बनाने का कार्य करते हैं। दूसरी ओर हमारा जो रिलेशनशिप्स हैं, उनको फ्लोरिश करने का कार्य करते हैं। अगर हम एक छोटा सा थैंक यू मन से महसूस करते हुए, केवल ऊपरी मन से नहीं, केवल औपचारिकता के लिए नहीं, जब हम उसको एहसास करके बोलते हैं, तो वो हमारे रिश्तों को, हमारे संबंधों को और प्रगाढ़ कर देता है। वो हमारे रिलेशंस इंप्रूव हो जाते हैं। हम सब ने एंड्रोसेलस और लॉयन की कहानी सुनी है कि किस प्रकार से वो एंड्रोसेलस जब अपनी गुलामी की जंजीरों से उसको तोड़कर, उस दास्ता के बंधन को किसी प्रकार से तोड़कर जंगल की ओर भाग रहा था। उसने एक शेर को देखा जिसके पैर में कांटा लगा हुआ था, और वो शेर नहीं चल पा रहा था, वो कष्ट में था। उसने बिना डरे हुए उसका कांटा निकाल दिया और वो वापस आगे बढ़ गया। लेकिन बाद में वही एंड्रोसोलस पकड़ा गया, और इत्तेफाक से वो शेर भी कहीं पकड़ लिया गया। तब वहां के राजा ने ये आदेश दिया कि एंड्रोसोलस को भूखे शेर के सामने डाल दिया जाए। अब वो शेर वही था जिसके पैर का कांटा एंड्रोसोलस ने निकाला था। उस शेर ने, एक पशु ने, उस कृतज्ञता के भाव को स्मरण किया, और उस पशु में भी वो भाव था कि किसी ने हमारी सहायता की थी, किसी ने हमारी मदद की थी, और उसने भूखे होने के बावजूद एंड्रोसेलस को खाया नहीं। सभी ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित थे। और ये कहानी हमें ये बताती है कि जब एक मनुष्य और पशु का संबंध उस कृतज्ञता के कारण मजबूत हो सकता है, तो हम तो मनुष्य हैं, और मानव मानव का परस्पर संबंध इस कृतज्ञता से कितना बेहतर हो सकता है, और यह पूरी ह्यूमैनिटी के लिए कितना पावरफुल यह हमारा ग्रेटिट्यूड हो सकता है, ये हम समझ सकते हैं। देन यदि हम ये बात करें, ये ग्रेटिट्यूड का बिहेवियर ये कैसा है, क्या ये इंस्टिंक्ट है या ये इंटेंशनल है? सबसे पहले तो यह इंटेंशनल ही है। हमें सोच विचार कर इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और तब यह जो हमारा भाव है, यदि हम इसे रोज छोटी छोटी बातों को महसूस करते हुए हेलो आरती मैम, आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है हमारा उनसे संपर्क टूट गया है। और यहाँ पर हम अपने सभी देखने वालों को एक बार बताना चाहेंगे कि हम बात कर रहे हैं परिचर्चा में ग्रैटिट्यूड एंड रेजिलियंस, तो स्ट्रेंथनिंग मेंटल वेलबींग। इस टॉपिक पर हमारे सभी एक्सपर्ट्स, हमारे सभी स्पीकर्स आपको बहुत ही अच्छे से गाइड कर रहे हैं और आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं अपने एक्सपर्ट के पास जाने की। आरती मैम, आर यू देयर? मैम, आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो आरती मैम। जब तक हम मैम से जुड़ते हैं, एक बार फिर से हम आपको वो तमाम माध्यम बता देते हैं जिनके द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं अपनी सभी क्वेरीज, अपने डाउट्स और अपने एक्सपीरियंसेस के साथ। आप हमें देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ncertofficial पर। जी मैम, आप हेलो। जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी मैम, आ रही है।
Yes, ma'am. We would like you to continue your talk, ma'am. Please continue. Hello. Hello. हेलो 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 मैम, आपको हमारी आवाज आ रही है? यस यस मैम, प्लीज कंटिन्यू। यस मैम। तो हम जब इस इंटेंशनल बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो ये जो प्रैक्टिस है ये हमें एक बहुत टिकल डाउन इफेक्ट देती है। अगर हम बात बोलते हैं या दूसरे को हम थैंक्स कहते हैं मन से, करता है जितना कि बोलने वाले को। और इसी कारण से ग्रैटिट्यूड हमारी स्ट्रेस लेवल को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को ये बहुत कम कर देता है। और इसका जो फीलिंग है ये उस एक असीमित शांति और प्रसन्नता से हमें भरता है, जिससे कि हम अपने सारे विचारों को अधिक अवेयर होकर, अधिक ब्रॉडर होकर सोच सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं ग्रैटिट्यूड की, तो वहां पर केवल औपचारिकता नहीं है, यह एक मन की प्रसन्नता का भाव है जो हमें एक व्यक्ति से पूरे दूसरे व्यक्ति को या एक समाज से पूरे समाज को जोड़ता है। ये फीलिंग है प्लेजर की, हैप्पीनेस की और वेल बीइंग की। अब हम इस ग्रैटिट्यूड को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम इस भाव को प्रैक्टिस करें? तो सबसे पहले हमें अपने सेल्फ एप्रिशिएशन से इसे आरंभ करना होगा। जब तक हम स्वयं के प्रति प्रशंसा का भाव नहीं रखेंगे, हम दूसरों में सकारात्मकता को खोज नहीं पाएंगे, दूसरों की प्रशंसा नहीं कर पाएंगे, दूसरों की अच्छी बातें हम देख नहीं पाएंगे और हम उनके प्रति कृतज्ञ नहीं हो पाएंगे। वास्तव में ग्रैटिट्यूड है दूसरों में, वस्तुओं में, प्रकृति में, हर बात में हमें एक कुछ सकारात्मकता को ढूंढने का। इसलिए सेल्फ एप्रिशिएशन इसका एक पहला कदम हो सकता है। इसके बाद हमारा जर्नलिंग क्या है? हम रोज एक थैंक यू नोट लिख सकते हैं, किसी बात को एक्नॉलेज कर सकते हैं कि हम यहाँ पर मैम, हमें आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आपको हमारी आवाज आ रही है? आज हमें कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि हम दूसरों के प्रति कृतज्ञ हैं, दूसरों के प्रति ग्रेटफुल अपने आप को मान रहे हैं। इस संदर्भ में एक रियल स्टोरी है जिसको कि 2007 में 22 दिसंबर 2007 की एक घटना थी। कैलिफोर्निया में जॉन क्रैलिक नाम के एक वकील हुआ करते थे, 55 वर्ष के एक वकील। बहुत उन्होंने सफलता को देखा था अपने जीवन में, बहुत सफलतापूर्वक उन्होंने अपने केस लड़े थे और लोगों में उनका बड़ा सम्मान था। पर धीरे धीरे करते करते उनकी वो वकालत, उनका वो कैरियर, उनका लोगों के साथ संबंध तो टूटने लगा। कहीं ना कहीं उनके क्लाइंट्स टूटने लगे और बहुत एक मुश्किल भरा दौर आ गया। अब उन्होंने एक दिन सोचा कि अब मेरे जीवन का कोई तात्पर्य नहीं है, और वो एक जंगल की ओर चले गए कि अब मुझे इस जीवन को समाप्त कर लेना चाहिए। परंतु जब वो एक अंधेरे जंगल की ओर जा रहे थे, तभी कहीं ना कहीं एक आवाज आई जो शायद उनकी अपनी आत्मा की, अपने मन की आवाज थी कि मुझे जो मिला है, क्या मैंने उसे अनुभव किया है? क्या मैं उसके प्रति ग्रेटफुल हूं? अब उन्होंने अपनी इस आवाज को अनुभव किया, सुना और चिंतन किया कि मुझे अपनी इस आवाज को सुनना चाहिए, इसे मानना चाहिए। वो वापस आए, उन्होंने इस बात का निश्चय किया कि मैं रोज एक थैंक यू नोट किसी को लिखूंगा, मैं 1 साल तक ऐसा करूंगा। उन्होंने स्वयं से वादा किया। सबसे पहले उन्होंने थैंक यू नोट लिखा अपने बेटे को, और वो उनका बड़ा बेटा जो पिछले 3 वर्ष से उनसे नहीं मिला था, जब वो थैंक यू नोट एक छोटा सा उनके पास जाता है, वो अगले दिन एक कॉफी मशीन उपहार में लेकर उनके पास आता है। उन्हें उस उपहार से ज्यादा खुशी इस बात की हुई कि मेरे वो संबंध जो कहीं ना कहीं जिनमें दरार पड़ गई थी, वो संबंध फिर से उस थैंक यू नोट से
आगे बढ़ने शुरू हो गए। यही उन्होंने अपने छोटे बेटे को थैंक यू नोट लिखा अगले दिन, और उनके Ma'am, छोटे बेटे ने भी उसी प्रकार। we would like you to sum up, please, ma'am. जी जी, तो मैम हेलो हेलो। कि इस थैंक यू के सहारे हम क्या कर सकते हैं, हमारी मेमोरीज में टर्न इनटू ए वेरी चेरिशफुल मेमोरीज, our dreams may turn into reality, our challenges may turn into strength, our relations may turn into unshakable bonds, days and years may turn into memorable journey of life. इसी तरह अगर मैं resilience की बात करूं, तो resilience है हमारा गिरकर उठना, और इसको भी हमारी कोरोना महामारी ने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि कुछ भी मुश्किल आ जाए, कितनी भी कठिन परिस्थिति दुनिया पर आ जाए, पर एक दिन सब कुछ सामान्य होगा, और यह दृढ़ निश्चय करना, यह दृढ़ विश्वास रखना ही हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। मैं अपने शब्दों में मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगी। चलना सीखने के लिए गिरना जरूरी है, चलना सीखने के लिए गिरना जरूरी है, आगे बढ़ने को गिरकर उठना जरूरी है। करो सामना हर चुनौती का, करो सामना हर चुनौती का, खुशियां मिलेंगी, बस आगे बढ़ते रहना जरूरी है, आगे बढ़ते रहना जरूरी है। थैंक यू। थैंक यू मैम। ने बताई वो मुझे पूरा यकीन है कि हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए वो लाभकारी रही होंगी। और जैसा आपने कहा कि कृतज्ञता का भाव होना व्यक्ति में बहुत जरूरी है, आभार व्यक्त करते रहना चाहिए, और इसके साथ ही साथ सेल्फ एप्रिसिएशन करना भी जरूरी है। और जैसे कि हम बचपन से जानते हैं कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, तो अपने आप को आप कभी भी दूसरों से नीचा या कमतर ना समझे बच्चों, आपको अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है। और ऐसी ही कुछ अच्छी अच्छी बातों के साथ हमारे अगले स्पीकर्स हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे भी हम परिचय लेते हैं। और हम गोपाल सर आपको अब इनवाइट करेंगे आपके डिस्कशन के लिए सर। Thank you, madam. I am audible to you, madam? Quite audible, sir. Okay, thank you so much, madam. So, first of all, thanks to NCRT to conduct such a wonderful program on MANODARPAN, Government of India initiative. And thanks to RI Bhopal, taking initiative to conduct particularly this topic, gratitude and resilience for strengthening well-being. Thanks to all the speakers today, panelists, and lastly, thanks to all the viewers of this program, today's program. So before me, there are 5 speakers spoken very nicely and narrated about the gratitude and resilience for strengthening well-being. So they put their views and their experiences, valuable experiences, to narrate about the gratitude and resilience. So first of all, the gratitude is not is a teaching. It is just come from the inward quality. So that means the telling the gratitude to a person or for a thing, it is come within. It is come from the get up from the bed to going into the bed. That means each moment of the life in a day should be situations arise to give the thanks note to a person or a thing or any material thing, etc. So the first thing is that, as Dhriti madam, she told that first thing is the what thinking. Whether a person is thinking positively or negatively, that is the matter to give the thanks note to thanks to something. The second one is the observation, how you are observing the nature. So the third one is there, the feeling, how you feel while observing the things with a keen interest. The last one is there, action. So through those steps wise, then we can try to give the gratitude to something good. So with this, what happened? The moment you get up from the bed, most of us, we used to give the thanks to the God, first of all.
first you pray the God for a moment. So that day must be go well without any trouble. So that the day will go well, then means at the end of the day, we used to give thanks to the God. Today, thanks for God. There is no obstacles while performing my duties or activities wherever I am. So in this way, the day wise, we used to give the gratitude to the people or a non-material things, etc. So at the student life, just I remember that first thing is what for the gratitude, self-satisfaction. A person should become a happiness that will start from the self-satisfaction. Whatever I have to satisfy myself in the life. First, whatever I have, whether I am using properly those things, those resources properly I am using or not. With that self-satisfaction, we can think a lot for further what I want further in my life. Without rethinking about the what I have, without using those things properly, then we are thinking about other things. There is no meaning at all. So that is why the first thing is self-satisfaction is the must to give the gratitude to become a happiness. The second one is their self-direction. One should not force, like parents or the teachers or any other person should not force them to give the thanks, to tell the thanks or to give the thanks note, etc. So that will come within without teaching by somebody. That will start from home. What I want to say that it is just like a genes effect, you can say. It comes from the grandparents, parents, and then children, etc. So it starts from the home. What I believe that the gratitude, imparting the gratitude, it starts from the home, then it continue throughout the day, throughout the life, etc. So that means the parents, they have to inculcate this kind of habit of giving the gratitude to their children, so that they can try to implement that kind of important thanks note to the others wherever they feel good and helping by somebody. So in this way, so definitely the gratitude, the impact of the gratitude, it will enhance the boosting of their positive energy in the body. So at the same time, when students will come to the school, so the teachers also, they have to be give such a comments that is called self appreciation. So when a student is doing something good, the teacher should give the positive note in the form of any token of any small appreciation, in the form of a star in the notebook or some kind of material thing if it is possible. Otherwise, telling very good, excellent, such type of comment in the form of a gratitude, that also gives the positive energy to the students in the class. So that means, so the role of the teacher and the parents very much to impart the gratitude to the children, and at the same time, in turn, that can be implemented in their daily life. So that, suppose when I was studying this class, still I used to remember my math teacher. The math subject is very difficult. Most of the students used to do mistakes, silly mistakes in the mathematics. So the teacher used to say, whenever any small multiplication or addition or division is performed by any student, immediately he used to call at the board and used to say that thanks, beta, very nicely you have done today. Very nice, do in this way. And he used to encourage the other students to perform the same kind of operations correctly. That is called appreciation by somebody. And at the same time, giving appreciation, that is self-appreciation. Ask the children to give the self-appreciation just like done very well. And definitely the gratitude, the impact of the gratitude, it will go to the students as well as the teachers and overall to the whole community. So whenever any program is going to conduct any place, it starts from the prayer and goes to the thanks note. That means, so
vote of thanks. Why the vote of thanks is given? Whoever is present there, right from this guest speaker to guest of honor and other VIPs and audience, etc. So program organizer, etc. So the thanks, vote of thanks, it helps to give the boost to the organizers to conduct such programs in future, so much more effectively. So now what are the benefits of gratitude? So as many speakers before me, there are 5 speakers, they are put their views about the gratitude and their impact. But what are the main benefits of the gratitude? The first one is the better physical health. As I told you, just that physical health, it starts, that means whenever you are giving the thanks note, thanks to the parents, whenever the parents, mother is prepared a very nice dish, then a child is telling mommy, very nicely you prepared. So thanks, prepared in the same way in commence days. So that small comment of gratitude is quite sufficient to her mother to prepare a dish with a very nice, effectively and qualitatively. So that will boost a positive energy to everybody so that their health becomes very healthy. Then second one is the improved self-care. So that means automatically whenever you are giving the gratitude to somebody, so the positive vibrations goes into the mind and body, that will lead to the give the positive energy to do something good in future. Then greater willpower. So while imparting the gratitude to the somebody, definitely it gives a willpower, confidence, self-confidence, self-boost, and self-esteem is also developed among the younger minds. Better mental health. As Tripti Madam, she told, the muscular strength will enhance while imparting such kind of positive note in the form of a thanks note, etc. So that gives a good effect on the mental process, and there is a long, so many mental connections will take place, and better relationships also. Whenever you are giving the gratitude in the form of thanks to the people, definitely the good relation between the persons. Like for example, teacher, student, a good relation takes place when there is a gratitude note is there. There is a good relationship between parents and their teachers. There is a good relationship between the parent and parents sometimes. There is a good relation between the parents and the head of the institution. There is a good relation between the community. So that in this way, there are so many benefits about the gratitude, imparting the gratitude in the daily life. At last, what I want to say that every student or everybody can make the diary of the thanks note at the end of the day. Before sleeping at night, so he or she should remember the things done during the whole day, and out of them, what are the good things happened, and noting those good things in the diary. So daily diary, and that is called thanks diary or gratitude diary, and noting every day and telling the or if it is possible, sending the messages to those people that yesterday have done good thing for me. So I am giving the thanks note. In this way, if a person is maintain a diary, gratitude diary, definitely, so that gives a self boost that person, and he or she try to do a good things in future also. So a grateful heart is the best kind to have. So that is why first action is the main thing. First of all, we have to love the persons. Then only it is possible to give the thanks note to somebody. So the love and affection is very important. A mother is love his son, daughter effectively. So that is why there is a strong relation between mother and child. Similarly, father also give the love and affection to their child. There are also strong relation between them. In this way, gratitude to their children and imparting the gratitude by the teachers in the class, definitely it gives a positive energy and a positive note to their students, and finally they perform very well in the examinations, and that will help a lot to grow further in future. With this, I will stop it here. I thanks once again to all the
audience and all the viewers of this program. Thank you, one and all. Thank you so very much, sir, for letting us know about the benefits of gratitude. And I'm quite sure that all the learners and all the viewer, teachers, educators, or students will be beneficial from this particular talk. And as we are running very short of time right now, let's move towards our last speaker, Dr. Lavina ma'am. Over to you. Thank you so much, ma'am, and thank you all the viewers and all the panel members जो अभी तक सारी चीजों को हम ध्यान से जो सुन रहे थे। ग्रेटिट्यूड की बात सभी लोगों ने करी और मैं जो बात करने आपसे आई हूँ वो थोड़ा सा इसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है रेजिलियंस। रेजिलियंस को बहुत सिंपल तरीके से समझने के लिए बस आप इसको देखें कि ये एक बैंड है, इसको मैंने स्ट्रेच किया और छोड़ा, ये वापस अपने पुराने शेप में आ गया। यही शुरू में सौरभ सर ने भी बोला था कि रेजिलियंस सिंपल शब्दों में अगर हम बात करते हैं तो ये एक एबिलिटी होती है बाउंस बैक करने की, लेकिन ये जो चीज है ये फिजिकल साइंस से आई हुई एक डेफिनेशन। साइकोलॉजिकली अगर हम बात करते हैं, सो कैन यू शेयर माय पीपीटी? श्योर मैम। या सो पेम्बरटन ने एक बहुत ही खूबसूरत सी डेफिनेशन रेजिलियंस की दी है। साइकोलॉजिकली अगर हम समझने की कोशिश करें तो इट इज अ कैपेसिटी टू रिमेन flexible in our thoughts, feelings and behaviors when faced by life disruption. Move to the next slide. So basically जब भी हम किसी adverse situation से गुजरते हैं, उस adverse situation में से आप कैसे overcome करते हो, कैसे उस situation को आप handle करते हो, cope up करते हो, वो आपका resilience वाला। Next slide please. अगर हम बात करते हैं रेजिलियंस की, सो बच्चों के लिए अगर मैं समझाने के लिए समझाऊं आपको एक उदाहरण के तौर पे, तो आप एक ऐसी सिचुएशन को इमेजिन करिए कि जहां पर जो है आप एक प्लेन है और वो प्लेन जो है वो टर्बुलेंस में फंस गया है और बहुत ज्यादा जो है वो टर्बुलेंस में ऊपर नीचे अप एंड डाउन हो रहा है। टर्बुलेंस जो है वो आपका या खराब वेदर जो है वो आपकी एडवर्सिटी कहलाती है। अब डिफरेंट तरीके हो सकते हैं इस खराब वेदर को रिस्पॉन्ड करने के। इसी तरीके से हर बच्चा डिफरेंट होता है। लाइफ के जो चैलेंजेस आपको पीपीटी में नजर आ रहे हैं, ये बहुत एडवर्स सिचुएशन से लेके डे टू डे की छोटी सिचुएशंस भी इन चैलेंजेस में मैंने लिखी हुई है कि लाइक कभी हम ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं जहाँ पे हमारे नियर एंड डियर वन को हमने खोया होगा। कभी ऐसा भी हुआ होगा कि किसी के साथ या हो रहा होगा कि पेरेंट का डिवोर्स चल रहा होगा, फैमिली में फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे होंगे, मेडिकल इलनेस चल रही होगी, पेरेंट के जॉब लॉस हुए होंगे, कोई मेडिकल इमरजेंसी चल रही होगी। सो जब हम इस तरीके की सिचुएशन और चैलेंजेस की बात करते हैं तो ये बहुत ही सीवियर एडवर्स सिचुएशंस होती हैं। वहीं पे लाइफ की छोटी सी सिचुएशंस की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज लाइक कि मैंने चाय में शक्कर की जगह नमक डाल दिया, ये मेरी एक एडवर्स सिचुएशन। सो बिग से बिग, स्मॉल से स्मॉल एडवर्स सिचुएशन। इन द सेम वे वो पुअर वेदर और टर्बुलेंस इन द प्लेन वो हमारा एडवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हर प्लेन अलग अलग तरीके से इस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करता है। तो हमारे जो ये डिफरेंट प्लेन हुए, ये हमारे आप बच्चे हुए जो अभी डिफरेंट क्लासेस में आप हो, डिफरेंट एज ग्रुप से हो। डिपेंड क्या करेगा कि इस टर्बुलेंस से, इस वेदर से कैसे निकलेंगे डिफरेंट प्लेन्स, यानी मेरे डिफरेंट बच्चे। पायलट मीन्स बच्चा खुद जो आप हैं वो पायलट हैं उस प्लेन के। को पायलट मतलब क्या कि आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स और अदर सपोर्टिंग पर्सन्स। देन टाइप ऑफ प्लेन मतलब क्या कि जो हम मेरे प्यारे से स्टूडेंट्स हैं, उनकी एज, उनका टेम्परामेंट, उनकी पर्सनालिटी वो क्या है, कैसी है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि आप कैसे उस पुअर वेदर को रिस्पॉन्ड करेंगे। नंबर 4 इज द इक्विपमेंट अवेलेबल मतलब क्या कि पायलट के पास, को पायलट के पास और जो ग्राउंड में क्रू है उनके पास क्या क्या रिसोर्सेज और इक्विपमेंट अवेलेबल है जिससे कि वो मदद कर सकते हैं उस टर्बुलेंस से बाहर निकलने।
एंड सिवियरिटी मीन्स वेदर या टर्बुलेंस कितना सीवियर है या कितना माइल्ड या मॉडरेट लेवल पे है. सो हम सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो आप आराम से जो है रिजिलेंट बन सकते हैं. और गुड न्यूज आप लोगों के लिए ये है कि ये आपको अकेले नहीं करना है. बिकॉज हमेशा हम लोग आके आपसे बात करते हैं और हम कहते हैं ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो. लेकिन कभी हमने ये नहीं करा कि आप सब करो, हम आपके साथ हैं. हम हर जगह पर डिफरेंट डिफरेंट लोग खड़े हुए हैं जो आपको फैसिलिटेट करेंगे. सो आपको अपने आसपास के लोगों के साथ कनेक्ट बनाकर इस रेजिलिएंट एबिलिटी को आप आराम से जो है डेवलप कर सकते हैं. रेजिलियंस की टाइप्स की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर मैंने 3 टाइप आपके लिए लेकर आई हूँ. वैसे अलग अलग जगहों पे कहीं पे 4 टाइप्स ऑफ रेजिलियंस, कहीं पे 5 टाइप ऑफ रेजिलियंस है. इंपॉर्टेंटली अगर हम बात करें तो फिजिकल रेजिलियंस जैसा आपको पिक्चर नजर आ रहा है कि जब भी कोई फिजिकल एडवर्सिटी में हम आते हैं तो हमारी बॉडी फिर से कैसे बाउंस बैक करती है, दैट इज आवर फिजिकल रेजिलियंस. मेंटल रेजिलियंस मीन्स व्हाट कि जब भी हमारा जो एबिलिटी है, क्रिएटिविटी है हमारी, या फिर हमारा जो है चीजों को क्रिएटिवली सोचने का तरीका, न्यू एडवर्स सिचुएशन में एडेप्टेशन हम कैसा करते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, वो हमारी मेंटल रेजिलियंस है. इमोशनल रेजिलियंस मीन्स कि आप अपने हार्डशिप्स को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो, साथ ही साथ आप क्या सोच रहे हो कि चीजें बेहतर होगी, उस सिचुएशन को देख पा रहे हो और उस एडवर्सिटी से बाहर निकलने के लिए तैयार हो. सो बेसिक एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ सोशल रेजिलियंस आल्सो. दैट मीन्स कि लोगों के साथ इंटरेक्ट करके, कम्युनिटी के साथ आप कैसे बाउंस बैक करते हो, जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमने पेंडेमिक में देखा जब सारी कम्युनिटी एक साथ आई और एक दूसरे को सपोर्ट किया उस सिचुएशन से बाउंस बैक करने में, कोप अप करने में. सो स्टूडेंट्स बेसिकली हम रेजिलियंस को, रेजिलियंस इज नॉट समथिंग जो कि आपके अंदर रहता है. ये एक ऐसी चीज है जो हमें ग्रो करते रहनी पड़ती है, डेवलप करते रहना पड़ता है, और एक्सपीरियंस के साथ हम और ज्यादा रेजिलिएंट बनते चले जाते हैं. एक बहुत अच्छी लाइन यहाँ पर मुझे याद आ रही है कि वी कैन रिलाई ऑन सक्सेस टू बिल्ड रेजिलियंस. Failure is necessary for us to grow our inner strength. If we are not tested, we will be unprepared for what the future holds. So, that means those failures are good. वहां से हमें और resilient बनने का मौका मिलता है. Next slide, please. Now, अगर हम resilience build करने की बात करते हैं, so यहाँ पर सौम्या मैम ने एक बहुत अच्छी बात करी थी. सेलिगमैन की उन्होंने बात करी थी और वहां से उन्होंने 2 चीजें बोली थी, वही 2 का मैं 3 बोलूंगी. सेलिगमैन ने 3P मॉडल दिया था. 3P को अगर हम ध्यान रख लेते हैं तो हम रेजिलिएंट बन सकते हैं. फर्स्ट P इज द पर्सनलाइजेशन. होता क्या है कि जब भी एडवर्स सिचुएशन आती है तो हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा उस प्रॉब्लम का या उस फेलियर का अपने ऊपर ब्लेम लेने की कोशिश करते हैं कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर बैड हैपेंस टू विथ मी. ठीक. अब ये जो अननेसेसरी ब्लेम हम अपने ऊपर लेते हैं, यहाँ से हम अनहेल्दी नेगेटिव कोपिंग मैकेनिज्म की तरफ पहुंच जाते हैं. सेकेंड P इज द परवेसिवनेस. परवेसिवनेस मीन्स व्हाट कि लाइफ के एक पार्ट में फेलियर आया और आपने बाकी के पार्ट में भी उसको फेलियर के तौर पे कंसिडर कर लिया और अपने आप को और ज्यादा गिव अप मोड में लेकर आ गए. परमानेंस मीन्स व्हाट कि एक बैड एक्सपीरियंस हुआ और आप उसी के साथ उलझ के रह गए कि अब तो आपका लाइफ जो है वो पूरी तरीके से हमेशा के लिए खराब हो चुका है, खत्म हो चुका है. सो सेलिगमैन ने जब पॉजिटिव साइकोलॉजी की बात करी थी तो वहां पे उन्होंने यही कहा था कि अगर हम इन 3P पे काम करते हैं, दैट मीन्स हम बच्चे के अंदर या एक इंडिविजुअल के अंदर हम रेजिलियंस को डेवलप कर रहे हैं. नाउ रेजिलियंस बिल्ड करने के लिए कैन यू शो माय स्लाइड नाउ, बिल्डिंग रेजिलियंस. अगर हम ये रेजिलियंस बिल्डिंग की बात करते हैं, सो ये कुछ छोटी छोटी सी टिप्स हैं या प्रीवियस स्लाइड प्लीज, जहां से let me tell you that we have 4 more minutes left for the Paricharcha, ma'am. 4 more minutes left, ma'am. Okay.
So agar sure. So I will directly come to the strategy ki how we can build the resilience. So in order to develop the resilience, you need to become proactive. You need to protect your downtime. Proactive means what? कि जब भी आप किसी सिचुएशन में उलझ रहे हैं, आप अपने आप से पूछें कि मैं इसको कैसे सही कर सकता हूँ, डैमेज को मिनिमाइज कैसे कर सकता हूँ. अपने डाउन टाइम को प्रोटेक्ट करना मीन्स व्हाट? कि थोड़ा सा आराम करना और अपने आप को वापस असेंबल करना, एनर्जी करना, ताकि हम उस रेजिलियंस एडवर्सिटी को और अच्छे से फेस कर सके. सेल्फ रिफ्लेक्शंस लेना, जिसमें ग्रेटिट्यूड में सब लोगों ने बात करी. अपने माइंडसेट को चेंज करना एडवर्सिटी के बारे में. हमेशा जब भी कोई एडवर्स सिचुएशन आती है, हमारा ध्यान पहले हमेशा निगेटिव थॉट पे जाता है. सो वो निगेटिव थॉट को रिफ्रेम करके पॉजिटिव थॉट्स में लेकर आना, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये देखना और सोचना और समझना कि अब मैं क्या कर सकता हूँ इस चीज से ओवरकम करने के लिए, और कैसे मैं इस चीज से और स्ट्रॉन्गर और डेवलप हो सकता हूँ. इंपॉर्टेंट चीज जो है रेजिलियंस डेवलप करने की, वो है कनेक्शन बिल्ड करना. अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, सभी के साथ एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड किया जाए ताकि जब भी आप किसी प्रॉब्लम में आए तो एटलीस्ट देयर इज समवन टू शेयर. बिकॉज होता क्या है कि जब भी नेगेटिव प्रॉब्लम आती है, कुछ होता है, तो हम सडनली अकेले हो जाते हैं, किसी से बात करने का मन नहीं करता है. सो बिल्ड दैट कनेक्शन और कोशिश करें कि फिजिकल कनेक्शन, वर्चुअल कम और फिजिकल ज्यादा. प्रेजेंट पे फोकस करें, पास्ट मिस्टेक से हम सीखें, फ्यूचर की तरफ हम इम्प्रूव करें, लेकिन ज्यादा फोकस प्रेजेंट पे करें, हियर एंड नाउ पे करें, बिकॉज दैट द ओनली थिंग जो आप कंट्रोल कर सकते हो. पास्ट में जो हो चुका है वो अब आप उसका कुछ नहीं कर सकते हो. फ्यूचर के बारे में आपको कुछ पता नहीं है. लाइफ जो है वो फेयर नहीं है, ऐसा हमें बार बार अपने मन में नहीं लाना है. आप नहीं, सभी के साथ लाइफ एक जैसी ही चलती है, सभी की लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं. देखना ये है कि हम कैसे वापस बाउंस बैक करते हैं. फ्लेक्सिबल रहना है और इस चीज पे फोकस करना है कि आप क्या चेंज कर सकते हो, क्या चीजें आपके कंट्रोल में है और उससे आप कैसे चेंज कर सकते हो. अगर इन चीजों पे आप फोकस करते हो तो आप ऑटोमेटिकली रेजिलिएंट बन जाते हो. और यहाँ पर कनेक्शन के साथ जो ग्रेटिट्यूड वाला सब लोगों ने बात करी, जब आप ग्रेटिट्यूड देते हो, थैंकफुल हो, सो डेफिनेटली आप एक रेजिलियंस की तरफ आगे बढ़ते हो. सो दीज वर द स्ट्रेटेजीज स्टूडेंट्स, एंड होप ये सारी चीजें आप अपने डेली रूटीन में लेकर आएंगे. सेल्फ अवेयरनेस को डेवलप करेंगे, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन, इन सारी चीजों के साथ आप अपने आप को और ज्यादा मेंटली और इमोशनली और फिजिकली स्ट्रांग बनाएंगे थ्रू एक्सरसाइजेस, थ्रू मेडिटेशन एंड थ्रू डीप ब्रीदिंग एंड by being the grateful and thankful. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो वेरी मच लवीना मैम. आपने इतने अच्छे से हमारे सभी व्यूअर्स को बताया रेजिलियंस के बारे में, और आपने बहुत ही खास बात बताई कि रेजिलियंस एक ऐसा गुण नहीं है जो कि शुरू से इंसान में होता है. आप उसे इनकलकेट कर सकते हैं, आप उसे ग्रो कर सकते हैं, आप उसे अपने अंदर बिल्ड कर सकते हैं. तो ऑल दी स्टूडेंट्स एंड ऑल दी लर्नर्स आउट देयर, आप अपने अंदर ये वाला गुण ला सकते हैं और देखिए कि जब आप में बाउंस बैक करने की क्षमता आ जाती है तो क्या क्या चेंजेस आपके अंदर आते हैं. इट्स टाइम फॉर मी टू रैप अप दिस परिचर्चा हेयर ओनली, बट लेट मी थैंक आवर ऑल दी पैनलिस्ट, सौरभ सर और सौम्या मैम, तृप्ति मैम, आरती मैम, गोपाल सर एंड लाविना मैम. थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, man. थैंक यू मैम. थैंक यू ऑल. और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे आज के इस मनोदर्पण परिचर्चा से हमारे सभी व्यूवर्स को बहुत लाभ मिलेगा. और अब समय बिल्कुल अनुमति नहीं दे रहा है कि इस सत्र को, इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन जाने से पहले एक बहुत जरूरी सूचना हम आप सभी के साथ साझा करना चाहेंगे एनसीईआरटी की पुस्तकों से संबंधित. वर्ष 2023-24 के लिए एनसीईआरटी की पुस्तकें पूरे देश भर में उपलब्ध है. आप ये पाठ्य पुस्तकें एनसीईआरटी के बिक्री केंद्रों से जाकर ले सकते हैं, जो कि नई दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता और गुवाहाटी में स्थित है. ये सभी बिक्री केंद्र प्रातः 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक कार्यरत रहेंगे पूरे सप्ताह और सभी सरकारी छुट्टियों के साथ साथ शनिवार और रविवार को भी. और यदि किन्हीं कारणों से आप इन बिक्री केंद्रों पर नहीं जा सकते हैं तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं. आपको जाना होगा हमारे वेबसाइट पर. माई वेबसाइट है ncertbooks.ncert.gov.in. ये सभी पुस्तकें आपको आपके घर पर डिलीवर की जाएंगी. इसके साथ ही यदि आप इन सभी का पीडीएफ वर्जन में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको जाना होगा एनसीईआरटी दीक्षा ई पाठशाला वेबसाइट हमारे मोबाइल ऐप पर. और हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारी वेबसाइट ncert.nic.in पर विजिट जरूर करें ताकि आपको पता चले
चले हमारे सभी ऑथराइज वेंडर्स की डिटेल, और इसी सूचना के साथ मैं रेणु भट्ट ले लेती हूँ आप सभी से इजाजत, अनुमति। आप बने रहिए eVidya चैनल और NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। सोच में सकारात्मकता लाएं, जीवन को बेहतर बनाएं। मनोदर्पण पर कॉल लगाएं, मनोबल अपना और बढ़ाएं। मनोदर्पण पर कॉल लगाएं, मनोबल अपना और बढ़ाएं। चलो आज ही प्रण ले हम, मानसिक स्वास्थ्य सुधारे हम। चलो आज ही प्रण ले हम, मानसिक स्वास्थ्य सुधारे हम। मनोदर्पण के काउंसलर से परामर्श पाने के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 844-844-0632। नंबर एक बार फिर सुने, 844-844-0632।